और सवाल। क्या आप हमें डेट मार्केट्स और उनके पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं प्लीज? डेट मार्केट का जो स्ट्रक्चर है चित्र, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? काफी इस पे चर्चा हुई है कि डेट में हम ट्रेडिंग जिस तरह हम इक्विटी में कर सकते हैं वो आज तक क्यों नहीं कर पाए? ब्रॉडली जितना एडवांसेस एंड जितना मॉडर्नाइजेशन एंड एफिशिएंसी इक्विटी मार्केट्स में आए हैं, डेट मार्केट्स में अभी शायद दोज विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आज के दिन में जो डेट मार्केट है, इट इज़ बाय एंड लार्ज है होलसेल मार्केट। तो काफ़ी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डेट मार्केट में, इट इज स्टिल एन इंटर बैंक और एन इंटर इंस्टीट्यूशन सॉर्ट ऑफ मार्केट। उतनी रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है ये, मतलब सेकेंडरी मार्केट में एटलीस्ट। रीजंस आर मेनी। The structure of the debt market itself today, actually if you see, government securities is the biggest part of outstanding debt. Government security holdings historically has been with the banks and funds, and for SLR and other requirements they have been holding these for a very long time. So the government debt market with such a huge outstanding stock itself only in the last 2 or 3 years has become somewhat active and liquid. There is a huge challenge there how to make retail come into this government debt market today. If you look at corporate debt, yes, corporate debt bhi काफी issuances होती है, but over the last few years again it has become a largely a wholesale market. There is not much retail participation. I remember in the 80s and 90s there used to be large industrial houses, AAA bonds in a sense, which used to be very well subscribed by retail. You know, the Tiscos and the Reliances. प्राइमरी मार्केट में होते थे, प्राइमरी मार्केट में होते थे। But today even that trend is gone. You don't really find too many public issues of इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी बंद हो गए, टैक्स रिलेटेड जो होते थे। Absolutely. तो सुदीप, क्या एक ही जरिया है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप जाके डेट फंड्स में उनके जो होते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं? हाँ विवेक, आज के दिन में रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ ये एक ही रास्ता है डेट में इन्वेस्ट करने का। आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि वन मस्ट अंडरस्टैंड कि सेकेंडरी मार्केट, जैसे चित्रा वाज मेंशनिंग, secondary market debt investment is very risky also. One must understand that. If you are taking a debt instrument in the primary market, you know what interest rate you are buying at. If you are holding it till maturity, you are assured of the, if it's a sovereign debt or a good corporate debt, you are assured of the principal plus the coupon at which you are buying. Whereas, I'm sure most of you are finance students, तो आपको मालूम होगा कि debt market में the price of the security will continuously keep changing based on the interest rate scenario, interest rate movement. So it's very volatile market. So for retail investor to just to plunge into the secondary debt market will be a bit risky also. आइए लेते हैं अगला सवाल जी। जैसे अपन ने we have thought that 5% of the savings are invested in the equity market. पर अगर आप यह बात देखेंगे कि जो वॉल्यूम जो ट्रेड हो रही है इंडियन इक्विटी मार्केट में इतनी हाई हो चुकी है, जैसे सेविंग्स बढ़ी है वो 5% वैल्यू भी बहुत बढ़ चुकी है, तो वोलेटिलिटी हैज इंक्रीज कंसिडरेबली एंड टुडे 800 पॉइंट अप और 500 पॉइंट डाउन इज कंसिडर्ड नॉर्मल, व्हिच वाज एक्चुअली अ बिग पैनिक 2 years बैक। तो व्हाट आई वुड वांट टू नो इज दैट ये जो फिगर है अगर ये बढ़ा और जो आज 5% ही सेविंग्स अंदर है वो बढ़ा, तो वोंट द वोलेटिलिटी इंक्रीज एंड द रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स इंक्रीज दैट मच विद द वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग? मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। लास्ट कैलेंडर ईयर द FIIs ब्रॉट इन, जो इतना बाहर से पैसा आता है हम लोग बातचीत करते रहते हैं, दे ब्रॉट इन $7.5 billion US, rough I'm telling you. You know how much remittance India got? Retail remittance from abroad, meaning NRIs who stays abroad, people who work abroad send remittances. It was $25.7 billion US. Just imagine. So today, why there is so much of volatility? Somebody asked about P notes. There was some regulatory changes in that scenario, and there was a huge volatility. Why did that happen? Because a significant part of the market investment today is coming through the foreign investors route, FII route, institutional investor route. If tomorrow retail starts participating in a big way, this volatility will go. Because as we know, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, रिटेल को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर. दे शुड नॉट बी इन द डे ट्रेडिंग. Generally, that's what the retail should be. If that happens, retail starts participating in a big way, the volatility also will come down. These kind of
small announcements which affect the foreigners, foreign inflows, will not be in a position to affect market so badly. So actually you have your answer in your question. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? I want to maybe share a different perspective on this. You know, we all talk about too much volatility in the market. Actually, ये volatility क्या है? I think it's very important to understand what we mean by volatility. Every rise and every fall doesn't mean volatility. If there are statistical measures of volatility, and all of you will understand because you all are students of finance, you can say yesterday's close to today's close can be a basis for volatility. Intraday में सबसे highest point और सबसे lowest point, intraday high low can be volatile. So like this, there are 4-5 ways in which volatility can be measured. Most often, people use close to close as a way of measuring volatility. If you use a close to close volatility, India actually doesn't rank very badly. We are not a nation with the highest volatility. This is something that we must understand. There are many countries, for example, Brazil, for example, Russia, and the reason I'm taking these two names is you must be aware of this BRIC comparison that keeps happening all the time. These countries actually on many occasions have higher volatility than India. Second, when Nifty was 3,000, you had a 150 point fall in Nifty, 5%, okay, काफी धक्का, but at 5,150 point fall cannot shake us up the same way. It is only 3%, right? So ये points के साथ जो हमारे मतलब वो थोड़ा बात वही है mindset ना कि एंड ऑफ द डे क्या? अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ आज मेरे हाँ। 10% लुढ़क गए, हाँ, तो मैं ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर लेके बैठूंगा. नहीं, बिल्कुल. But 10% क्यों लुढ़क गए वो तो मतलब that is a separate analysis which we have to do. डे के एंड तक तो वापस भी वहीं तक आ गए. Exactly. So, you know, analyze when we say what we mean by volatility and let's understand it in the right perspective. That's the इसमें एक और only... नजरिया ये है कि कुछ हद तक शायद इस वॉलेटिलिटी से वो इन्वेस्टर्स जो बिना सोचे समझे टिप्स के लिए आते हैं बाजार में शायद धक्का खा के चले भी जाएं और अंडरस्टैंड करेंगे कि अब मुझे सेंसिबली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बिल्कुल. ये एक अलग उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है. Absolutely. सही बात, बिल्कुल सही बात. चित्रा और सुदीप से हमारी बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ. पहला कदम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे. आप देखते रहिए पहला कदम.